जी आए नूं प्यारे विद्यार्थियों 9th क्लास दी साइंस दी बुक दा चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर विद दिस वीडियो ते इस वीडियो विच असी उस चैप्टर दा कुछ हिस्सा करांगे अंडर द टाइटल नोट्स पार्ट 1 in this video we will talk about atoms molecules and ions सो तुसी सारे अपनी नोटबुक और पेन ले लो ते नोट्स ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਲਿਸਨ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਟੂ ਦੀ explanations being given ਤੇ ਇसी ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ you can find the solutions of your math notebook also ਸਾਰੀ 9th ਦੀ exercises ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ so if you have not subscribed to this channel do subscribe and also share the videos with your fellow friends so आओ शुरू करिए Atom. What is an atom? An atom is the smallest particle of an element that can exist alone or in combination. ठीक है सो अगली गल जोड़नी है नाल it maintains the elements identity जिस एलिमेंट दा वो पार्टिकल हिस्सा है मतलब कि जो जिस एलिमेंट दा वो पार्टिकल है एटम it will maintain the elements identity in all physical or chemical changes ਉਹਦੀ आइडेंटिटी मेंटेन रहेगी even if that element or material undergoes any physical or chemical change the atom of that element will remain as such ठीक है जी ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਕਿ what is an element element is the one of the pure form of substance there are only two types of pure substances either element or compound ਸੋ ਉसी ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਐਟਮ ਦੀ smallest particle of an element which can exist alone or in combination is known as atom ठीक है ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਟਮਸ ਆਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਸਮਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਹੁਣ we will get some idea just to imagine we measure atomic radius मतलब कि it's like a circular particle spherical particle atoms ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ radius ਹੈਗਾ it atomic radius is in nanometers ਜਿਵੇਂ millimeter is 10 to raise power minus 3 meter nanometer is 10 to raise power minus 9 meter this means 1 billionth of a मीटर ठीक है ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਈਟਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0.1 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਅਗਰ 0.1 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਇਜ਼ 10 ਟੂ ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ -9 ਸੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 0.1 ਹੈ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਟੂ ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ -10 ਮੀਟਰ that is the radius of hydrogen atom ठीक है ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਟੱਕਰ ਤੇ we know about ਰੇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੈਂਡ radius of a grain of sand ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੇਤਾ ਦਾ ਕਣ ਰੇਤਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਣ ਜਿਹੜਾ grain of sand ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ 10 to raise power -4 ਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ this is 10 to raise power -4 and this is 10 to raise power -10 ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ 6 ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ that is hydrogen atom is 10 to raise power 6 times smaller than a grain of sand. This example is given to help you imagine the size of an atom. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਜੋ grain of sand ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਇੱਕ ਸੈਂਡ ਦੇ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਂਡ ਦੇ ਜੋ ਰੇਤਾ ਦਾ ਕਣ ਹੈ ਉਹਦੇ 10 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਅ ਗ੍ਰੇਨ ਆਫ ਸੈਂਡ ਇਨਟੂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕੁਅਲ ਪੀਸਿਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਐਟਮਸ ਆਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਸਮਾਲ they cannot be seen with the eyes ठीक है अगली गल देखिए
our entire world is made up of atoms। साडी सारी दुनिया जिहड़ी आस-पास जो भी देखते हो, साडा शरीर भी, खाण पीण दी चीज़ां भी, टेबल कुर्सी अलमारी जो भी आस-पास देखते हो, entire universe is made up of atoms। ऐसे पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों कि our entire matter is made up of either elements or compounds। तो elements और compound कैसे बने ने? They are made up of atoms। So atoms are just like building blocks। ठीक है। So our entire world is made up of atoms, though हालांकि atoms are extremely small, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ कि they are very small। We can produce the magnified ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ enlarged, ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ image, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ image ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ of surface of elements showing atoms। ਜੋ elements ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਲਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਇਨਲਾਰਜ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਦੋਜ਼ ਐਟਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ। ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੀ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਟੂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਟਾਈਮਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਜ਼ ਐਟਮਸ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ। Atoms of most elements are not able to exist independently। most कुछ दे exist करते हैं, वो दसांगे अगे। So atoms of most elements are not able to exist independently। independently exist नहीं करते, they exist in combination। ठीक है। Atoms form molecules। atoms तो की बनते हैं, फिर molecules बनते हैं and ions। molecules बनते हैं and ions बनते हैं। These molecules or ions aggregate in large numbers to form the matter that we can see, feel or touch। So सब तो छोटे atoms, most atoms do not exist independently। They join together to form molecules and ions, and molecules and ions aggregate in large numbers to form the matter which we see, feel, touch all around us। ठीक है। आगे चलिए। कहते इनिशियली हुन एलिमेंट्स के नाम भी है। इनिशियली सब तो पहले द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले एलिमेंट्स का नाम किदां दिता गया? जिथे एलिमेंट डिस्कवर किया गया, वेयर एवर इट वॉज डिस्कवर्ड इट टुक द नेम ऑफ दैट प्लेस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस। साइप्रस कंट्री का नाम है, उत्थे जगह का नाम है, उत्थे कॉपर मिलिया, डिस्कवर किया गया, नाम मिल गया साइप्रस, तो बन गया कॉपर। सम नेम्स वर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कलर्स। जिदा गोल्ड वाज बेस्ड ऑन द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। ठीक है ना। सो इंग्लिश वर्ड है ओदा मीनिंग है येलो, तो उधरों दी शब्द आ गया गोल्ड ले लिया। ठीक है। पर नाउ डेज आजकल की आजकल इस तरह नहीं हो रहा, बिकॉज स्टिल न्यू एलिमेंट्स आर बीइंग मैन मेड, बल्कि आर्टिफिशियल भी बन रहे हैं। तुम दसिया बच्चों कि ओनली 92 एलिमेंट्स आर नैचुरली अकरिंग, बाकी आर आर्टिफिशियल। तो हुण की नेमिंग किस तरह होंगी है? नाउ डेज IUPAC, याद कर लो, एब्रीविएशन इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बारे जी एक संस्था बनी हुई, इट्स एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर and applied chemistry। ठीक है। it approves the names of elements and their symbols। हुण जिहड़े नाम हैगे ने इंटरनेशनल जिहड़ी यूनियन हैगी है of pure and applied chemistry, that organization decides the name and symbol to be given to each element। ठीक है। तो कहते many of the symbols are the first one or two letters of the element's name in English। हुण symbol किद्दां दित्ता जांदा है? Most of the symbols are the first one or two letters of the English name। The first letter of symbol is always written in capital। पहला letter हमेशा capital होएगा, which we call upper case, and the second letter in small, which is lower case। एवं तुमने example दवांगे थोड़े जे। Symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name। ते कई बार की होंदा है कि जिहड़ा first two letters तो बन सकता है, कई बार first letter ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਕਲੋਰੀਨ, ਇਹ ਦੇਖੋ C ਤੇ L ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ CL, ਕਲੋਰੀਨ।
जिंक Z ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ N ਥਰਡ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਸੋ ZN जिंक। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ZI ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਟਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। Other symbols have been taken from the names of elements in Latin, German or Greek। कुछ उस लैंग्वेज ਤੋਂ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, लैटिन ਤੋਂ, जर्मन ਤੋਂ, ग्रीक। For example, the symbol of iron is Fe। आयरन ਦਾ symbol Fe ਹੈਗਾ, from its Latin name ferrum। Sodium is Na from natrium, natrium ਤੋਂ ਬਣਿਆ sodium Na। Potassium is K from kalium। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਉਹ Na ਹੈਗਾ, आयरन ਦਾ Fe ਹੈਗਾ, पोटेशियम ਦਾ K ਹੈਗਾ, because they have been taken from other languages। ठीक है, ਜਿੱਦਾਂ K is from kalium, Na is from natrium, F is from ferrum। Therefore each element has a name and a unique chemical symbol। हर एक एलिमेंट ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ। So instead of writing the big name, full name, we can write the symbol to save time and space। ठीक है, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ Al, ਆਰਗਨ Ar, ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ Ar, ਬੇਰੀਅਮ Ba, ਬੋਰੋਨ B, ਬ੍ਰੋਮੀਨ Br। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੀਅਮ ਇਜ਼ Ba, बोरोन इज ओनली B एंड ब्रोमीन इज Br। फिर कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO। जिस तरह टेबल्स याद करीदे ने इस तरह इन्हू 8-10 बार बार पढ़ो तो मूँह जबानी लिखो, फिर तुहानू याद हो जाएंगे, क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हुण कैमिस्ट्री थोड़ी शुरू हो रही है, सो ये सारी चीज़ां यूज होणगियां, ये सारे सिंबल्स तुहानू याद होने चाहिए। कॉपर इज Cu, फ्लोरीन इज F, गोल्ड इज Au। ठीक है, हाइड्रोजन इज H, iodine is I, iron is Fe, lead is Pb, magnesium is Mg, neon is Ne। इसी तरह नाइट्रोजन is N, ऑक्सीजन is O, पोटेशियम is K, सिलिकॉन is Si, सिल्वर is Ag, सोडियम is Na, सल्फर is S, यूरेनियम is U, जिंक is Zn। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮਸ ਐਂਡ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਯੂ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਹੁਣ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਅ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਅ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਦੇਖੋ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ or a compound। ठीक है, that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substance। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, atoms of the same element or of different elements can join together to form molecules। molecules ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? atoms ਤੋਂ। ठीक है ना, so molecules can consist of atoms of the same element or atoms of different elements। ठीक है, a molecule is in general a group of two or more atoms that are chemically bonded together, chemically जुड़े होंदे ने, that is tightly held together by attractive forces। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜੋਗੇ। ठीक है ना, so they are chemically bonded, not physically जोड़े नहीं होंगे। So there are attractive forces between them, they hold them together। ठीक है, okay। ਹੁਣ आ गया molecules of elements, क्योंकि molecules they can be of element, they can be of compounds। So molecules of elements, the molecules of elements are constituted by same type of atoms। Molecules of elements are made by atoms of same type। ठीक है, ਹੁਣ देखिए अगली definition, atomicity। What is atomicity? The number of atoms in a molecule of an element is known as its atomicity। The number of atoms
in a molecule of an element is known as its atomicity. So molecules can be monoatomic, only one atom, diatomic, two atoms, triatomic, three atoms, or polyatomic, more than three atoms. ठीक है, और देखिए एग्जांपल्स है दे उन. Okay, monoatomic molecules are molecules having only one atom. ਤੇ एग्जांपल ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਨੋਬਲ ਗੈसेस. ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਬੱਚੋ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ. ਇਹਦਾ ਨੋਬਲ ਗੈसेस that is ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀ ਨੋਬਲ ਗੈसेस? 6 ਗੈसेस ਹੈਗੀਆਂ. ਕੋ ਹੀਲੀਅਮ ਗੈਸ, ਨਿਓਨ, ਆਰਗਨ, krypton, xenon and radon. These are monoatomic molecules. They are monoatomic. फिर अगली गल है कार्बन. And metal elements do not have a simple structure but consist of a large and indefinite number of atoms bonded together. They do not have simple structure and they can form many indefinite number of atoms bonded together. So their atomicity is considered as one. Carbon ਦੀ ਤੇ metals ਦੀ atomicity is treated as one. ਹੁਣ ਆ ਗਏ diatomic molecules. Molecules having two atoms are known as diatomic molecules. Example ਕਿਹੜਾ ਹੈ? For example, oxygen. It exists as O2. Oxygen independent exist नहीं करती, not as monoatomic. It exists as diatomic. Nitrogen is also diatomic. It exists as aggregate of two atoms, two nitrogen atoms. Hydrogen gas also exists as H2. Chlorine gas exists as Cl2. Bromine is also Br2, etc. are diatomic molecules. ठीक है, आगे चलिए. Triatomic molecules are molecules having three atoms. Ozone is a triatomic molecule. Ozone सानू पता है बच्चों, it's a protective layer in the upper part of the atmosphere which prevents the vegetation and animal life from harmful ultraviolet rays from the sun. ठीक है, so ozone जो है it consists of three atoms of oxygen. It is an example of triatomic molecule. ठीक है, फिर अगर polyatomic molecules are molecules having more than three atoms. ठीक है, example करें ने, for example phosphorus, it exists as P4, 4 atoms of phosphorus sticking together, and sulfur S8, 8 atoms of sulfur. ठीक है, so sulfur exists like this. They are examples of polyatomic molecules. है बच्चों, सारे याद कर लेने ने तुसी. It is important. short answers which short answer type questions which इस तरह दे questions आ सकते हैं. ठीक है, ओके. हुण आ गया molecules of compounds. पहले असीं पढ़े molecules of atoms, हुण molecules of compounds. Atoms of different elements joined together. ਜਿਹੜੇ molecules of elements सीगे, they were atoms of same type of element. And molecules of compounds are atoms of different elements joined together in definite proportions. एक गल लिखनी जरूरी है. They join together in definite proportions in fixed ratio. ठीक है, to form molecules of compounds. For example, a molecule of water H2O has hydrogen and oxygen in the ratio 1:8 by mass. बच्चों जिले अगली वीडियो असीं एटॉमिक मास करांगे, फिर तुहानूं गल समझ आ जाएगी. ठीक है, सो यह रेशियो हैगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हुंदा है, सो ऑक्सीजन का 16 हुंदा है. सो 1 into 2 2 ते 2:16, 2:16 becomes 1:8 by mass. ठीक है, इसी तरह a molecule of ammonia NH3 has nitrogen and hydrogen in the ratio 14:3 because atomic mass of nitrogen is 14, hydrogen is 1, so 1 into 3 is 3. So ratio becomes 14:3 by mass. ठीक है जी, आगे चलिए. A molecule of carbon dioxide has carbon and oxygen in the ratio 3:8 by mass. Why? Because carbon का जो atomic mass है that is 12, oxygen is 16, so 16 into 2 is 32. So यह हो गया 12:32. 4 ना भाग कर दो, 4 की 12, 4 8 32.
सो 3:8 बाय मास दे आर इन दिस रेशियो। बच्चों अगले ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ that different atoms, I mean atoms or different elements, they join together in definite proportions। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ it will always be in the ratio of 1:8 by mass, combination molecule of hydrogen and oxygen। this ratio will not change all over the world, ठीक है। इसी तरह ammonia will always be in this ratio 14:3, 14 ग्राम नाइट्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इन द रेशियो ऑफ 3:8, दैट मीन्स 3 ग्राम कार्बन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन, इस तरह होएगा, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। हुण आ गया बच्चा आयन, ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग ऐसी क्या सी ना कि आयंस एटम्स यूजली डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, they join together to form molecules or ions। An ion is an atom or a group of atoms। Ion is an atom or a group of atoms carrying a positive or a negative charge, ठीक है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ it is not mentioned here क्योंकि इस सिलेबस ਵਿੱਚ है नहीं, इस चैप्टर ਵਿੱਚ नहीं हैगा। so we will study in more detail in the next chapter। ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ why this positive or negative charge forms, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, an ion is an atom or a group of atoms carrying a positive or a negative charge। compounds made of metals and non-metals contain these ions। ਮੈਟਲ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਲੋਰੀਨ ਫਲੋਰੀਨ ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨ ਐਨਾਇਨ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਆਇਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆਇਨ ਹੈਜ਼ ਗॉट ਈਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਨ ਐਨਾਇਨ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਆਇਨ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਆਇਨ ਹੈਗਾ it is known as anion, and the positively charged ion is called a cation। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। anion is a negatively charged ion and cation is a positively charged ion। the constituent particles, ਹੁਣ एग्जांपल है, the constituent particles of the compound sodium chloride। ਹੁਣ देखो sodium is a metal, chlorine is a non-metal। ਇੱਥੇ क्या ना compounds made of metals and non-metals contain these ions। one example है sodium is a metal, chlorine is a non-metal, so they have joined together to form the constituent particles are ions। kade ions? So the constituent particles of compound sodium chloride are positively charged sodium ions, that is sodium plus positive ions, and negatively charged chloride ions, this is chlorine minus, ठीक है। so sodium plus chlorine minus, so this is a cation and this is an anion। ਹੁਣ कुछ और एग्जांपल ले लिए, H plus हाइड्रोजन आयन, K plus पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम 2 plus मैग्नीशियम आयंस, कॉपर plus कॉपर आयन, कॉपर 1 आयन, कॉपर 2 plus कॉपर 2 आयन, आयरन 2 plus आयरन 2 आयन, आयरन 3 plus आयरन 3 आयन। आयरन के ब्रैकेट ਵਿੱਚ 3 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ in roman letters 1 2 3 3 आईज ਪਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ 2 plus ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ, ਜ਼ਿੰਕ 2 plus ਜ਼ਿੰਕ ਆਇਨ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 3 plus aluminum ion, etc. are some more cations। these are examples of cations and some more anions are। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਆਇਨਸ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਈਡਰਾਈਡ, ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਆਕਸਾਈਡ, ਸਲਫਰ ਤੋਂ ਸਲਫਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾਈਟਰਾਈਡ, ठीक है। मैं रिपीट करना एक बार, हाइड्रोजन तो हाइड्राइड, ब्रोमीन तो ब्रोमाइड, ऑक्सीजन तो ऑक्साइड, सल्फर तो सल्फाइड, नाइट्रोजन तो नाइट्राइड आयंस। So these are anions
दीज आर केटाइंस। ठीक है, आगे और देखिए। ओके बच्चों, लास्ट स्लाइड है इस वीडियो दी, पॉली एटॉमिक आयन। सो एक लाइन च दा डेफिनेशन है बस, अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज अ पॉली एटॉमिक आयन। इस तो पहले बच्चों ਅਸੀਂ देखे सिंगल आयन देखे ना, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, they were ions consisting of single atoms. So polyatomic means more than one atom. A group of atoms carrying a charge is known as a polyatomic ion. ਹੁਣ देखो है, एक हो गया अमोनियम, N और H, दो आयन आ गए। So it's a group of atoms and it's carrying a positive charge, इन्हें क्या जाना है अमोनियम। फिर आ गया हाइड्रोक्साइड, O and H, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फिर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने दो एटम ने थे नाइट्राइट माइनस, फिर NO3 माइनस, ये 3 आ गया, सो नाइट्रेट, दिस इज नाइट्राइट, दिस इज नाइट्रेट। हियर देयर आर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इन नाइट्राइट देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। फिर आ गया कार्बोनेट, CO3 2 माइनस कार्बोनेट, फिर HCO3 ये बन जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, फिर आ गया SO3 2 माइनस सल्फाइट, फिर SO4 सल्फेट। देखो जिथे इतने सी ना, इधर 2 and 3 नाइट्राइट नाइट्रेट, इतने है 3 and 4, सो जिथे 3 है SO3 सल्फाइट, दिस इज सल्फाइट। तो जिथे ऑक्सीजन के 4 एटम ने उत्थे बन जाएगा सल्फेट। ए बच्चे सारे कॉपी डाउन करके इन्हों उच्ची उच्ची बोल के स्पीक लाउडली टू योर सेल्फ एंड ट्राई टू मैमोराइज दैम। ठीक है, फिर जिवें जिवें तुसीं यूज़ करते जाओगे तो इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर सैकेंड नेचर, फिर तुहानूं इहदी आदत पै जाएगी। पर स्टार्टिंग विच तुसीं इन्हां नूं 8-10 बार 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 उच्ची उच्ची बोल बोल के पढ़ो, ताकि तुहाडे जुबान दे उत्ते मूँह दे उत्ते चढ़ जाणगे। सो यू विल नॉट बी स्ट्रेंजर टू दीज टर्म्स। मतलब बार बार पढ़न का, उच्ची उच्ची बोलन का की फायदा है, ताकि तुहाडे मूँह ते चढ़ जाए, तुहाडी इन्हां दे नाल पछाण बन जाए। इट इज़ लाइक लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, इट इज़ नोन एज समथिंग लाइक लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सो यह आ गया PO4 3 माइनस फॉस्फेट। ठीक है, अगे जो असीं फॉर्मूलेज करांगे उहदे विच सारे यूज़ होणगे, यह चीज़ां यह सारी यूज़ होणगियां। ठीक है, सो PO4 3 माइनस फॉस्फेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉली एटॉमिक आयंस। सो ऐसे बच्चों पॉली एटॉमिक आयंस दे एग्जाम्पल। सो इन दिस वीडियो we learnt about atoms, then molecules, molecules of elements, molecules of compounds, then ions and polyatomic ions. So इस वीडियो लिए इन्ना ही, ते in the next video we will continue with this chapter with other topics। ते तुसीं इसी तरह मेहनत दे नाल, अपना लगन दे नाल ते अनुशासन दे नाल अपनी पढ़ाई करी चलो। अगले वीडियो तक लिए गुड बाय। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।